Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here we will discuss about the difference from genes and alleles, although both of these are present in the chromosome. So, when we define gene is a part of DNA that carries information to produce a protein and determine a character. Side by side, it will control the inheritance of character, for example, color, eye, height, blood groups, flower color in plants, all of these, or we can say express the traits. Expression of the traits is called the will be done with the help of the gene. ये gene की मदद से होगा. Or we can say a segment of DNA that codes for a trait that will express the traits, and these are present not internally, these are present over the chromosome. ये chromosomes के ऊपर located होते हैं. While in case of alleles, we can say allele is a alternative of same gene. एक ही gene की alternative form जो होगी या variant of from that gene is known as the alleles. उसे हम क्या कहेंगे? Alleles कहेंगे. It will show different expression of the same trait, although color of the eye, but the basic color expression will be changed. So it is alleles. इसे हम क्या कहेंगे? Allele कहेंगे. It is found at the same locus on homologous chromosome. और इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा, लेकिन it will be present, allele will be present on the part of the homologous chromosome. अब यहाँ पे इनके फंक्शन, इसके alleles के फंक्शन क्या हैं? It cause variation, determine the dominance. The dominant character will be shown and recessive will be hidden. Produce different phenotypes. Phenotypes हम कह सकते हैं कि general or external appearance is known as the phenotype. So the alleles always give the different phenotypes in any traits, just like the brown and blue colors of the eyes. जैसे हमने blue और brown colors of eye की example दी. अब हम ज़रा इसकी clear identification देखते हैं. How can we distinguish between alleles and genes? Genes में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? This one will be gene, this one will be gene. Genes of this chromosome, genes of this chromosome. But when if we talk about both of these, then these will be alleles. ये alternative है तो ये alleles होंगे. This will be, ये these are not same, this will be different. ये दोनों हमारे पास एक dominant है और एक recessive है, लेकिन both of these will be called collectively alleles. इसे हम alleles कहेंगे. अलग से ये genes हैं, लेकिन अलग से ये genes है, लेकिन इन्हें एक साथ कहें तो हम ये both of these are alleles of each other. ये alleles का पेयर है. इसी तरीके से although both of these are different, यहाँ पे ये दोनों सेम हैं. Both give the dominant character of their own chromosome, but these will be alleles from each other. अगर ये identical हों alleles on homologous chromosome, अगर ये सिंगल क्रोमोसोम पे हैं, सेपरेट क्रोमोसोम पे है, देन दिस विल बी जीन्स. ये जीन्स है. लेकिन अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो वेदर दीज आर सेम और these will be different, both of these will be counted as the alleles. इन्हें हम alleles कहेंगे. अगर ये सेम है तो हम इन्हें कहेंगे homozygous dominant alleles, और अगर ये different हैं और एक dominant है एक recessive है तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि ये this will be heterozygous. This will be heterozygous alleles. ये heterozygous, ये homozygous alleles है, ये heterozygous alleles है. ये alleles of the dominant characteristics है जिसमें dominant characteristic शो हो रहा है. ये जो होगी homozygous alleles of the recessive character, homozygous recessive alleles count होगी. अब I think you understood क्लियरली कि किस तरीके से हम जीन्स को डिफ़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम एलील्स को डिफ़ाइन करते हैं. इफ़ दीज आर अल्टरनेटिव जीन्स एंड प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, देन दिस विल बी एलील्स ऑफ द सेम जीन. It may be homozygous dominant alleles, it may be homozygous of the recessive alleles, it may be heterozygous alleles, it may be dominant heterozygous alleles which will be shown. It may be dominant, it may be क्या कहेंगे इसे, ये alleles है लेकिन इसमें हमारे पास dominant heterozygous alleles है, because both of these will be different. ये एक दूसरे से different है. So I think you judged or you noticed the basic difference between gene and alleles.